So before that, I have to go for the running of the packages. So first of all, I have to go for the packages. So there is something called as pandas, SPD. Okay, NumPy for the arrays. Then PyLab is basically for plotting. We are using it. I'll let you know why we are using it in the model. So now class, just understand. Linear model is for linear regression as well as for logistic regression. So basically from sklearn dot linear model import linear regression. So I might ask in the practical assessment that what is the library or from where logistic regression algorithm can be imported. So what you people have to go for, you have to simply write this command. Okay. So basically sklearn is the package. In this, there is a library that is linear underscore model. From linear underscore model, there are n number of algorithms and we are importing only the logistic regression. Getting my point, class? So I hope I am actually telling you side by side what exactly the practical can hold of. Okay. After this, since I had run this, after this, I have all the algorithms. Now there is k neighbor classifier, that is KNN. Now it is basically K neighbor classifier. लिखने का तरीका देख लो, capital K, capital N and capital C. कहाँ से import हो रहा है? From sklearn package, from the library that is neighbors. Okay. After this, we are actually going for the tree because we are talking about, we had worked yesterday for the decision tree. So basically there is an algorithm that is called as decision tree algorithm. It can be worked as a classifier or a regressor or a card, both. So it will be called as decision tree classifier. That means we are working for the classification problem. If I write it to be decision tree regression, it is basically called as a regression problem. लेकिन उठाया कहाँ से है? T is the library in the sklearn package. Getting my point, class? Clear till this point? Yes, ma'am. After this, there is sklearn package.svm. SVM stands for support vector machine. Now from SVM library, you are importing SVC. So SVC stands for support vector. Classifier. It is a classifier. So if it is a classifier, after this, there is a random forest, जो कि हम कल की क्लास में करेंगे, you'll get to know. Now, there is something called as a classification report and confusion matrix. I hope मैंने जब confusion matrix I guess जब हम लोग probability कर रहे थे तो मैंने बोला था मैं बाद में practical के time पे बताऊंगी. So I'll go with that. Okay, after this, there is an accuracy score because we have to calculate the accuracy. What exactly the algorithm is, it is having 95% or 70% or 28%. So we have to call because it is a metric property, because it is a numerical value, so it is basically from sklearn dot metric. Metric मतलब measurement वाली unit के लिए किसको call करा जा रहा है? Accuracy underscore score को call किया जा रहा है. After that we know what exactly is matplotlib. Seaborn is another kind of package जहां पर हम plotting या visualization को बहुत बेहतर तरीके से visualize कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है. Suppose if I want to plot two different plots on one graph, undoubtedly Seaborn is capable of doing that, but matplotlib के लिए I have to call different functions. I have to create the function. It is not something called, अगर suppose मुझे bar graph के साथ ही एक distribution भी plot करना है तो matplotlib नहीं कर पाएगा. इसके लिए मुझे proper एक function create करना पड़ेगा. I'll tell you what we mean by k-fold and cross-val score. And कहाँ से call किया जा रहा है? Model underscore selection. So after this, if I'll run it, this cell. So what? Okay, so it is basically read. There is an error. So if I'll do this, so now it is exactly showing me the data set relating to the California housing, and this is very famous data set. So now it is actually reading all the parameters, all the variables. So now in this case, till this point, it is the feature and median house value is the outcome. So basically this is the label. So is it a regression problem or a classification problem? Yes, class, is it a regression problem or a classification problem? Class, just hold on.
Okay. So class, is it a regression problem or a classification problem? Who will tell me? Latitude, longitude, housing median age, total rooms, total bedrooms, population, household, median, income. And finally, I am having median house value. Is it a classification problem or a regression problem? Regression. Why regression? Classification. Classification problem. Why classification and why regression? Okay, classification क्यों है बेटा? Ma'am, because discrete class label है. Discrete class labels, then it will be more than 1 and 2 and 3. Data can be continuous and discrete. Regression means? Depending on factors. Okay, what do you mean by continuous and discrete data? Let me know. Okay, categorical data and continuous data का क्या मतलब होता है? Yes, class. Can anyone let me know what is categorical data and discrete data, continuous data? सबको पता है ये आंसर. कोई ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैम मेरे को नहीं पता. Anyone? Static like yes, no, male, female. So exactly, are we having the data set like this only? No, In what we are having? So over here, Yeah. if I'll say I have a housing price, जिसमें मुझे बोला जा रहा है that इसमें हमें बोला जा रहा है that we are just going with let's say this. Okay. So it's like क्या ले लिया जाए? We have so in this data set, if I'll talk about, I have only the latitude, longitude, housing median age, and all the values are in continuous form. They are starting from some number, ending to some number. Getting my point? So in this particular cell, I'm having a data which is basically continuous. They are not categorical. So categorical data bhi nahi hai, or it is a continuous data. Secondly, for classification problem, the output should be like whether I'll go to purchase that house or not. Getting my point, class? Yes, ma'am. Over here, I am not getting an output like, okay, the latitude is 33.64 and the median income is 3.1917. Then the price is what of that house? So the price is a numerical data. For one house, it is basically some other price. For another house, it is something else, some other price. Getting my point? So it is a regression problem, not a classification problem. Clear हुआ? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम तब होती जब ये बोला जाता कि आपके मीडियन हाउसिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग वेदर you'll be going to purchase that house or not. Then it is yes or no. Then it is basically a classification problem. But right now over here it is a regression problem. Is it okay, class? Fine. So यहाँ से भी तुम लोग कॉल कर सकते हो. But now since I have taken another data set that is basically the diabetes, prima diabetes data set. So what I'll do, I'll simply go with diabetes CV, CSV. So I'll import it first. So first of all, I'll import it. Now I have this diabetes CV, CSV, which is something that I loaded. So after this, what I did, I actually called the data set. Till this point, I have the data set. So I called the CSV, diabetes.csv, and loaded it in a variable that is data set. Then I asked to print it. I asked the shape of the data set. How many heads are there? 5 heads. First 5 rows has to be printed. At this point, let's work out first, and after that, we'll see what exactly it is coming out. I'm not going for this right now. So after this, okay, train test bit is being gone. So I'll add it. So over here, because we had asked for print data set, so the data set, these are the data set that has been printed.
The shape of the data set, that is 768 rows, 9 columns. After that, we had asked for print the shape of the data set. That is the third statement, this one. So it is giving you a shape of the data set that is coming out to be 768, 9. So over here it is 768, 9. This is the shape of the data set. After that, we had asked for that we need first 5 rows of the data set. So they are printing it. Now over here we are having first 5 rows. So till this point it starts from indexing is always starting from 0. So it is 0 till 4. At this point it is clear to everyone. Yes, Correct ma'am. us. After that, we are actually taking out the columns. Who will let me know what are the name of the columns? Pregnancy, Some insulin, blood pressure, diabetes, pedigree, function. Exactly. So they are basically the columns. So undoubtedly, what we had done, we had gone for the name called as features. So what we said, it is basically a, okay, Monica ma'am is also there. Okay, so it is the feature column. So now the feature column is basically what we called off. हमने सिर्फ नाम दे दिए features कौन-कौन से होंगे. ठीक है, उन features के नाम हम लोगों ने यहाँ पर redefine कर दिया है. After redefining it, what we did? Let's check it out first. What exactly we did? We called the labels also. Let's see why the labels are 0 and 1, because over here the outcome is whether the person is suffering from diabetes or not. So 0 is not suffering, 1 is suffering from diabetes. Okay. So now what we did? We simply labeled the data as, so features are labels, we are very much clear. So we simply said the feature column names are this and the label names are 0 and 1. Now, is this a problem of classification or a regression? Who will tell me? classification. Classification problem. So I hope now it is clear to everyone how to identify the data set to be classification or regression. Okay, class, just hold on. I'll add that particular thing, model.selection. Let's see. Import. Train. So I'll rerun it. So till this point it is clear. So I hope till this point it is very much clear what exactly, how to load it, how to create the, how to call the name of the columns. And I let you know why I had created another array or a list basically for feature column and the label, because we have to plot it also. After this, because we have to do the splitting of the data set. Some part of the data set is being called for the training and some part of the data set has to be called for the testing. So for that, we have to call some variable that is basically x and y. Now I am saying that x should carry data set. कि मेरा जिसमें मेरा loaded data set है उसमें मैंने कह दिया कि feature columns are the part of x and y is having the data set dot outcome. That means the outcomes or the label. Right now, why I am using the outcome, because in the data set, the value is being defined by a variable called outcome rather than labels. Getting my point, class? I hope why में हमने label क्यों नहीं use किया और outcome क्यों use किया वो clear हो गया है? Because हम क्या कर रहे हैं? Data set में से उठा रहे हैं. Data set के अंदर जो data given है या जो CSV file थी, हम उसके columns को के names को उठा रहे हैं. Clear हुआ यहाँ तक? Yes, yes. After this, it is being called as print features X and print labels Y. So if I'll see to it, so I have till this point the features, from this point till the diabetes pedigree function, and the labels are for the values, corresponding values are 0, 1, 0, 1, 0, 1, because they are the label given to that. The outcome is being given. Then what we have to go for, we have to do the splitting of the data set. Why? Because we have to define that some part of X and Y are belonging to the training set and some part of the X and Y are belonging to the test set. So X train, X test, Y train and Y test. I hope ये हम सबको पता है जब भी हम train test split करते हैं. So this is the common syntax that we use to perform. So over here, X train and Y train. X train की corresponding values are Y train. So X train will be having all the feature values. Y train will be having the corresponding label values.
X test will be having some part of the total complete data set to be the feature values, and corresponding output values will be the Y test. Clear हुआ यहाँ तक? Yes, ma'am. अब उसके आगे क्या कहा गया? We called the function train test split, and we said first one for the training features के लिए, then the corresponding value of the output, and test side is 0.20. That means testing data set कितना होगा? हाँ जी क्लास, कौन बताएगा टेस्टिंग डेटा सेट कितना होगा? If test size is 0.20, what will be the test value? कितनी होगी? I know that 768 is basically the total number of rows for the complete data set. Then what will be the value related to your test size? बहुत आसान है, कौन बताएगा? टेस्ट साइज गिवन है 153. It is coming out to be 153. How did you calculate, beta? Ma'am, 8 into 0.2. 8 into why 8 into 768 into 0.2. Why 0.2? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? Test size and टेस्ट साइज कितना गिवन है? 0.20. 0.20 is how much? 20%. Exactly. So 20% of the complete data set is being defined as the testing set. So I can change it. So it is a default value. So class, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट साइज हटा देती हूँ और मैं यहाँ कुछ नहीं देती, मैं सिर्फ x और y पास ऑन करती हूँ, so automatically my machine learning algorithm or my algorithm will get to know that it will take the default value of the test size. So default value is always 0.25, 0.2. Now it is up to you. क्या कह रहे हो बेटा? हमें पॉइंट में आ रहा है 153.6 आ रहा है 768 into 0.2. 768 into 20% करो बेटा. हम यहाँ पर प्रॉपर न्यूमेरिकल नंबर नहीं लिखते हैं, हम इसे 0 से 1 के बीच में डिफाइन करते हैं, वो परसेंट में अपने आप लेता है. 768 into 20 divided by 100 is, if it is in the decimal also it will round it off. आधा डेटा थोड़ा ना उठाएगा. हाँ जी क्लास, कितना आएगा? 768 divided by 5 is how much? Yes, first years. 153.6. 150. 163.6. 153.6. Exactly. So 153.6. It will not take it to be 153.6. It will take 154 as the testing size. Getting my point? वो ऑटोमेटिकली उसे राउंड ऑफ लेके चलेगा. अगर ये वैल्यू 153 होता तो 153 लेके चलता. ठीक है? After this, जब हमने यहाँ पर स्प्लिटिंग कर ली है, so now we defined a variable. I will be starting with decision tree because अभी कल की क्लास हमने decision tree किया, इसलिए हम लोग लेके चल रहे हैं. So I will be defining a variable where I'll call my algorithm. हम कौन से वाले algorithm को बुला रहे हैं या कौन से वाले classifier को बुला रहे हैं, because it is a classification problem. So we call decision tree classifier. Now decision tree classifier को call करने का reason क्या था? Because we had already gone for class in yesterday's class, so we simply called a decision tree classifier. Now it's up to you whether you want to go for logistic regression, support vector machine, linear regression, or your random forest. ये तुम्हारी मर्जी है. Now see, I hope सबको दिख रहा है ना? Def underscore init criteria Gini splitter best max step is none, min sample is split is 2. ये सारे, these are basically the arguments related to the decision tree classifier. And the most important decision tree classifier arguments are criteria. इसमें दो टाइप के क्राइटेरियाज होते हैं. फर्स्ट वन इज गिनी एंड सेकंड वन इज एंट्रोपी. गिनी के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में बात करी थी. बेसिकली ये क्या बताता है? कितना मिसमैच अलाउड हो सकता है या कितना प्योरेस्ट फॉर्म में स्प्लिटिंग हुआ है. गेटिंग माय पॉइंट? हमने कल की क्लास में स्टडी किया था. Yes, ma'am. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज बेसिकली मैक्स डेप्थ. दैट मींस इट इज बेसिकली कंट्रोलिंग कि कितनी डेप्थ तक स्प्लिटिंग होनी चाहिए या कितनी डेप्थ तक ट्री की ब्रांचेस को स्प्रेड कराना है. गेटिंग माय पॉइंट क्लास? एंड आई विल शो यू कि कैसे आप कंट्रोल करते हो. मैं दिखाऊंगी अभी.
I'll show you tree also. So over here, I had just defined that the max depth is equal to 5. And since डिसीजन ट्री क्लासिफायर व्हेन वी वर सीइंग, तो हमें ऑलरेडी दिख रहा था क्राइटेरियन गिनी डिफाइंड है, इसका मतलब डिफॉल्ट वैल्यू इज गिनी. इफ आई चेंज इट टू एंट्रोपी बाय राइटिंग क्राइटेरियन इज इक्वल टू एंट्रोपी, वो चेंज होगा. एल्स ये डिफॉल्ट वे क्या लेके चलेगा, गिनी लेके चलेगा. इज इट ओके? मैम मैक्सिमम डेप्थ निकालते कैसे हैं? मैक्सिमम डेप्थ निकालते, इट्स अ रैंडम नंबर, इट्स प्योरली एट योर विल हाउ मच दैट यू वांट टू डिफाइन इट. आप कितना सिस्टम को कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो एज पर योर फीचर्स. आई होप सबको याद होना चाहिए, हमने कल की क्लास में ये बात बोली थी, जितने नंबर ऑफ फीचर्स होंगे उतनी नंबर ऑफ स्प्लिटिंग होगी. याद है? Yes, ma'am. तो अगर अब मुझे क्या करना है, जब मुझे पता है राइट नाउ ओवर हियर देयर आर ओनली 9 कॉलम्स. So 9 features will be there, 9 times splitting will be there. So now it depends on 9 times splitting में भी वो कैसे split कर रहा है. Yes, no, yes, no, yes, no. Every now then it will be making a decision. According to decision, it will define कि ये category है तो ये करना है, ये category है तो ये करना है. So now the splitting, according to splitting कितना complex होगा, we don't know. I'll show you right now. अभी जब तुम्हें tree दिखाई देगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा. Now the depth is a random number. Defaulted value is 5. तो 5 का मतलब क्या हुआ, maximum इतना भी बड़ा कॉलम के साथ डेटा सेट हो, आपको सिर्फ 5 टाइम्स स्प्लिटिंग करनी है. क्लियर हुआ? इफ आई मेक इट टू 10 टाइम्स स्प्लिटिंग, इसका मतलब क्या हुआ, इफ आई एम गोइंग फॉर द स्प्लिटिंग फ्रॉम द रूट टू द नोड, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी. सी, ये मेरा रूट हुआ, यहां से मेरी ब्रांचिंग हो गई, अगेन दिस इज अ नोड, अगेन यहाँ पर एक ब्रांचिंग हो गई. इफ यहाँ पर वो टर्मिनेट हो गया कि फर्दर कुछ नहीं आ रहा है, डेफिनेटली वो यहाँ पर क्या करेगा, ब्रांचिंग करेगा, स्प्लिटिंग करेगा. स्प्लिटिंग करने के बाद अगेन इट विल आइडेंटिफाई वेदर टू गो फर्दर और नॉट. इफ सपोज इट इज सेइंग यस, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, तो इट विल बी टर्मिनेटिंग. अगेन फ्रॉम एट दिस पर्टिकुलर नोड इट विल अगेन डू द ब्रांचिंग. ओके, यहाँ पर क्या कहता है कि सपोज नहीं हो रहा फर्दर टर्मिनेट, सो इस वाले नोड से वो फिर ब्रांच करना शुरू करेगा. नाउ दिस इज बेसिकली होता क्या जा रहा है, एट एवरी पॉइंट इट इज स्प्रेडिंग. गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी शुरू कहाँ से हुआ था, यहाँ से, and right now it is this much has been spread out, so your system is getting more and more complex. So I have to identify at which particular node I have to block it. So this is the first split. यहाँ पर आकर के first split हुआ, this is my first. यहाँ पर आकर के मेरा second split हुआ, this is my second split. यहाँ पर आकर के मेरा third split हुआ. अभी आगे कुछ नहीं हुआ, so it depends on exactly मुझे कितना splitting कराना है. So ये काम कराने के लिए I have to define the depth of the tree. So depth is moving because it is a inverted tree. तो कितना below down ground जाना है, ये मुझे max depth से पता चलता है. ठीक है क्लास? I'll show you right now. At this point it is clear कि हमने classifier कैसे call किया. Now the variable classifier is being defined by a decision tree classifier having an argument as max depth equal to 5. Now we have to do what? We have to fit the model for the training set. So training set क्या था, x और y. So 80% of the training set has to be fit in this model which is basically a decision tree classifier. So इस classifier के अंदर हमने इसे fit कराया. Fit कराने के बाद हमने कहा print this classifier. So we can see what actually we mean by this. It is just showing you this decision tree के अंदर क्या क्या values हैं. So it is simply saying alpha is equal to 0.0, class weight none, criteria क्या है, नहीं, जो कि मैं already बोल चुकी हूँ, max depth is 5 because I had defined. Rest other things are defaulted. Then क्योंकि अब फिटिंग हो चुकी है, फिटिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, मैंने तुम्हें कुछ पढ़ा दिया है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि तुम्हें समझ में आया नहीं आया, बाय आस्किंग क्वेश्चंस. सेम है. अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा ठीक है फाइन, यहाँ तक तो फिटिंग हो चुकी है, आफ्टर दिस लेट्स गो एंड प्रेडिक्ट द वैल्यूज. सो हमने क्या कहा, जो टेस्ट वैल्यूज हमने डिफाइन करी थी 20%, लेट्स चेक इट आउट, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन क्या हो रही है. सो हमने कहा क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट. तो उसने प्रेडिक्ट किया, ठीक, उसने क्या वैल्यू प्रेडिक्ट की है, क्लासिफिकेशन. सो इट हैज प्रेडिक्टेड फॉर, एंड प्लीज क्लास जस्ट अंडरस्टैंड, ये जो 20% है दे आर रैंडम वैल्यूज. बेसिकली 768 वैल्यूज में इसने रैंडमली कुछ वैल्यूज को टेस्ट में डाल दिया है, रिमेनिंग 1 को कहां डाल दिया है, ट्रेनिंग में. इट इज हैविंग अ वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए जो भी सेट रहा होगा, फिर फॉर ऑल द फीचर्स द आउटपुट इज 1. दैट मींस दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. रिमेनिंग 10, the next 10 are not suffering from diabetes. 11th one is suffering from diabetes. Then again 7 people are not suffering from diabetes. तो ये random data points को उसने collect करके testing में डाल दिया. Till this point it is clear to everyone. यहाँ तक. This is the prediction of the test data set.
क्लियर हुआ? Shall I proceed further? Yes, ma'am. Okay. After this, there is something called as a confusion matrix. I'll tell you now itself what exactly we mean by it. So now I said that you have to print the confusion matrix. So यहाँ तक हम लोगों ने prediction को print करा लिया. Confusion matrix हमेशा क्लास याद रखना. Confusion matrix हमेशा उन दो variables के बीच में प्लॉट करी जाती है जो प्रेडिक्टेड है और टेस्ट वैल्यू के लिए डिफाइंड है. सो बेसिकली टेस्टिंग डेटा सेट के साथ डिफाइंड होगी. सो वाई टेस्ट इज बेसिकली दी वैल्यूज दैट आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग and y predicted are the values that are calculated, measured and then given by the algorithm. तो ये जो y टेस्ट और y predict है ये वही सेट ऑफ वैल्यूज के लिए है जो ऑलरेडी टेस्ट सेट के लिए डिफाइंड है. क्लियर हुआ क्लास? ये आर्ग्यूमेंट सबको समझ में आ गया है? ये वाला आर्ग्यूमेंट. तो अगर हम एक्यूरेसी भी निकालते हैं, आई होप. मैम आप एक बार रिपीट कर दो वाला आर्गुमेंट. बेटा अभी 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 कर रही हूँ. यहाँ पे देख, इट इज y actual which is basically my y underscore test and y pred is nothing but my y underscore prediction. Okay, now just understand, ये वाली जो वैल्यूज है ये ऑलरेडी नोन है मुझे. क्यों? क्योंकि मैंने अपने सिस्टम को ऑलरेडी बोला हुआ है कि एक्स टेस्ट क्या है, वो 20% ऑफ द टोटल डेटा सेट है. एक्चुअल वैल्यूज है. क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम. These values are already known to me due to my y test because y test is the corresponding output of my x test and my algorithm, मेरे machine learning model ने y predict को कैलकुलेट करके प्रिडिक्ट किया है आफ्टर टेकिंग इनपुट एज x टेस्ट. अब जब मेरा y टेस्ट मेरे y underscore pred के बराबर होगा, then I can simply say that the accuracy is, क्या होगी accuracy? 1. Accuracy will be very high. It will be near to 100%. Getting my point? लेकिन अगर मेरा y test is not equal to y pred, then what will be my accuracy? Low. It is less than 1. That it can be anything. लेकिन अगर मेरा वेरिएशन बहुत ज्यादा है y टेस्ट और y प्रेडिक्शन के अंदर, definitely it will be closer to 0. आई होप सबको याद होगा, हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था जहां हमने कहा था एरर निकाल के देखते हैं, जहां हमने कहा था y actual minus y pred. जितना कम ये एरर होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी. यही सेम चीज जो हम लोगों ने एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर में डाला हुआ है वेरिएबल जो हमने कॉल किया था, वहां हमें दिखेगा. तो राइट नाउ इसके बाद confusion matrix, classification report, accuracy, whenever we are calling these type of functions, they will take the argument as y underscore test, y pred, basically actual and prediction. So actual and predicted values को ही वो confusion matrix, classification report, accuracy में define करता है. Clear हुआ? Yes ma'am. So now let's talk about what we mean by confusion matrix. So और shall I एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे को पहले डिसीजन ट्री दिखा देती हूँ. आफ्टर दैट आई विल गो विद द कंफ्यूजन मैट्रिक्स. At this point it is clear to everyone. अगर किसी को डाउट है अभी भी तो पूछ लो. यहाँ तक अगर क्लियर है तो यहाँ तक सारा का सारा एल्गोरिथम, जितने भी हम लोग एल्गोरिथम्स पे काम करेंगे. आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन. Yes, ma'am. Okay, so till this point anybody is having any kind of doubt? Even if I want to change this decision tree classifier to something else, let's call a linear regression model. So what I have to do, I just have to do only one thing. I have to make it commented. Exactly, I'll simply write classifier is equal to let it be linear. So automatically it is here and I'll simply do this. If I'm not passing any argument, if I'm not specifying any argument कि मेरी value argument की यही होनी चाहिए, तब तक मैं उसे कुछ नहीं दूंगी. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है fit intercept true
normalize is equal to false, copy underscore x is equal to true, n underscore jobs is equal to none. अगर मैं suppose define करना चाहती हूँ, let it be n underscore jobs is equal to -1, then it's okay. If I don't want to pass any of the argument, then it will be the defaulted one. Now it is everything will be defaulted. I can work with this also. So this is what exactly all the algorithm will do. Now I just change only one thing, that is I just replace the name of decision tree algorithm by another algorithm, that is linear regression. So everything remains the same. सब सारे algorithm पे काम करने का तरीका में what you people should understand, हमें कौन से पैकेज से कौन सा फंक्शन कॉल करना है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा. क्लियर है क्लास? आई होप इट्स क्लियर टिल दिस पॉइंट. फाइन. Yes, याद ma'am. रखना है हमेशा फंक्शन कॉल किया, लीनियर रिग्रेशन और डिसीजन ट्री. उसके बाद हमने पहले फिट किया मॉडल को, अपने पैरामीटर्स को उस मॉडल पैरामीटर्स में फिट किया. फिट करने के बाद हमने प्रिडिक्शन किया. सो सबसे पहला काम क्लासिफायर को कॉल किया, क्लासिफायर को फिट किया, क्लासिफायर से प्रिडिक्ट कराया. ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे के बाद आने वाले हैं. ऐसा नहीं है कोई एक पहले आ जाएगा कोई एक बाद में आ जाएगा. यहाँ तक क्लियर है? सो लेट्स मूव अहेड. I'll go afterwards. So this is actually what I am getting as my predicted values. So actual values. So this is basically for the test. Class दिख रहा है 154 values Yes, last ma'am. week. So now these are the random values that has taken by the machine as the testing point. So कोई ID थी 24 पर actual value was coming out to be 1 and predicted value is also coming out to be 1. इसका मतलब for 24th patient it is confirmed कि उसको डायबिटीज ही है. 312 नंबर पे जो भी पेशेंट के पैरामीटर्स थे उसके अकॉर्डिंग द prediction is actual value is that the person is suffering from diabetes. But while doing the calculation, the machine is saying what exactly it is saying? Patient does not have diabetes. Exactly. So now this is where your machine learning model comes into picture. तो जरूरी तो नहीं है ना कि सारी प्रिडिक्शन सेम आए एक्चुअल के साथ. देयर कुड बी सम पॉसिबिलिटीज जहां ना हो. सो ओवर हेयर यहां तक हमें क्लियर है कि ये एक्चुअल और प्रिडिक्टेड है. लिखने का तरीका क्लास देख लो. व्हाट आई डिड, आई सिंपली कॉल्ड अनदर फंक्शन एज df pd डॉट डेटा फ्रेम. फर्स्ट वन एक्चुअल लेबल करो किसके साथ? वाई टेस्ट के साथ. मतलब वाई टेस्ट वाली सारी वैल्यूज एक्चुअल के अंदर चली जाए. प्रिडिक्टेड कॉलम के अंदर सारी की सारी वैल्यूज कौन सी चली जाए? वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्ट वाली. तो सारी वैल्यूज आपके सामने है. सो नाउ यू कैन एक्चुअली सी आउट मैक्सिमम. अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो मेजरली आर मैचिंग. जो इसमें रैंडम डेटा दिख रहा है 154 सारी वैल्यूज नहीं दिख रही है, बट जितनी हमें दिख रही है उसमें दिख रहा है मेजर आर मैचिंग, few of them are not matching. So we can simply say that accuracy is bit less. And I'll say, show you exactly कि कैसे दिखेगा. यहाँ तक हमें क्लियर हुआ. After this I'll go with this one. So class, this is the representation of decision tree classifier. Classifier के पास कौन सा था? Decision tree classifier. So this is what exactly the text representation. So it says 4 feature, first is fourth feature, then the third feature, ये 4 3 2 1 सबके साथ करता जा रहा है. So for fourth feature, third feature, zeroth feature, second feature. So basically जो splitting करता जा रहा है as per the, हमने कल की क्लास में पढ़ा था जिसका cost function कम होगा उस पर splitting ज्यादा होगी. I hope याद है सबको. So जिसका कॉस्ट फंक्शन, जिस फीचर का कॉस्ट फंक्शन कम हुआ उसके लिए स्प्लिटिंग हो गई, जिसका फीचर ज्यादा हुआ उसके लिए स्प्लिटिंग नहीं हुई है. तो ये तो टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है. बट इफ आई वांट टू शो यू इन टर्म्स ऑफ द ट्री जो हमें दिखता है जैसा हमने देखा है ट्री की फॉर्मेट में, so this is how it actually looks like. क्लास दिख रहा है सबको? आई नो इट द विजुअलाइजेशन इज वेरी स्मॉल, ये और ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है. So if I'll go with, दिखा first node, then I'll go with, so over here it is first node. पहले नोड से 2 स्प्लिट हुआ, 2 स्प्लिट से फर्दर स्प्लिट हुए 2 2 में. यहाँ पर देखो थर्ड स्प्लिट पर आकर गई, यहाँ वाले स्प्लिट पर. इसका गिनी फंक्शन हाई था, इसका गिनी फंक्शन लो था, तो ये तो स्प्लिट हो गया लेकिन ये यहाँ टर्मिनेट हो गया. गेटिंग माय पॉइंट क्लास?
सिमिलरली यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों के किन्हीं फंक्शन मैचिंग थे, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों के दोनों स्प्लिट हुए, यहाँ पर भी दोनों के दोनों स्प्लिट हुए, एंड फर्दर सो ऑन. सी, this is how, now this is actually the depth, so it is moving and moving and moving and moving. So ये नीचे से एक स्टेप से, फिर नेक्स्ट स्टेप से, फिर नेक्स्ट स्टेप से, फिर नेक्स्ट स्टेप पे. Now let's talk. हमने मैक्सिमम डेप्थ कितना दिया था क्लास? 5. So 5. let's count out कि exactly 5 splits हैं या नहीं है. So this is the first node, this is the root node, Yes, ma'am. this is the second node, second, then Yes, ma'am. third split, then fourth split, then fifth split, and after fifth split देखो खत्म हो गया है, further splitting नहीं हुई है. Now it is actually what we had done, हमने ये splitting terminate करा दी है. Clear हो गया? Maximum depth का मतलब क्या हुआ? Yes, ma'am. Now if I'll change it to higher version, let's go with, मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कराऊंगी, I'll just go with maximum depth, it's 5, I'll simply go with 10. Again it's too large, but still let's work on it. So this is where we have to go for. So now just see. So it will take time because now the depth is more, splitting is more. Now see. So class दिखा? Root node, first split, second split. Second split के बाद, this is my third split, this is fourth split. Then fifth split, sixth, seventh, eighth, and ninth, and then 10th. Clear हो गया? Yes, ma'am. So just think about it. What will be the computational cost? Is it less or more? At every stage, it actually calculated the Gini function, then the accuracy, then the Gini function, then accuracy, and then defining it. I hope now you people get to know what exactly we mean by the depth. So spreading is more. It is now, पहले 5 था, so now the depth is 2 times of the initial depth. If I'll go with 15, then it will be 3 times the initial depth. Clear हो गया class? What we mean by the depth? Yes, ma'am. Okay. So I hope यहाँ तक सबको clear है. Then let's move ahead. I'll go with this. So now let's talk about what we mean by your classification report. पहले classification करते हैं, फिर हम precision इसकी बात करते हैं. So class, first see, there is something called as precision. Classification report के अंदर there are 4 features that are being calculated. First one is called as the precision. Second one is called as recall. There is a score. Stats वालों को बहुत अच्छे से पता है कि what we mean by F score या F1 score. Yes class, पता है किसी को? कौन बताएगा मुझे? Stats में से कोई बता सकता है what is F1 score? Okay class, let's go. Precision, recall, F1 score and support is actually calculated on the predicted values or the actual values. We were having only 2 predicted class, that is 0 and 1. दिख रहा है सबको? और 0 and a 1. Yes class. Yes, ma'am. Fine. And after this there is a precision. Precision का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? कितना close है actual value से? Exactly. So for 0 it is 0.80. So it is the output is actually, predicted value is actually the precise one with the actual one. So 80% of the data for class 0 are well matching. They are highly precise in nature. Similarly for class 1, 75% of the predicted values are actually completely matching with the actual values. Clear हुआ यहाँ तक? Is it okay? Yes, ma'am. What is recall? What is recall? कौन बताएगा मुझे? Anything कि recall का मतलब ये होता है या something different. I don't know exactly recall होता क्या है.
So let's talk about it. So this is where my confusion matrix actually comes into picture. So let's go with, first of all, let's define the what exactly we mean by confusion matrix. So it is confusion matrix. So how is it made? So I have over here, it is true positive, and I'll tell you what exactly we mean by true positive, false negative, false positive, false negative, and true negative is over here. And either there is the true class, and over here it is predicted class. This is positive, this is negative. This is again positive, this is negative. Fine. Okay, class. So now this is actually what we mean by confusion matrix. By name itself, it is clear that it actually confuses. So I have a true class. True class का मतलब क्या हुआ? We have the actual values. So this is my y actual. Fine. Y actual. Predicted class means the predicted one. That is y pred. Now it says when the both the values are ट्रूली पॉजिटिव, कब होंगे दोनों के दोनों पॉजिटिव? जब एक्चुअल भी पॉजिटिव वैल्यू को डिफाइन कर रहा हो और प्रेडिक्टेड वैल्यू भी पॉजिटिव वैल्यू को डिफाइन कर रहा हो, then it comes with true positive. So if I'll say the person who is suffering from diabetes is well confirmed by the test also, इसका मतलब टेस्ट भी उसको पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहा है और जो उसके सिम्टम्स हैं वो भी उसे पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहा है, then it is called as a true positive. Clear है class? Yes, ma'am. Fine. If I'll say false negative, the person is suffering from diabetes, but the test related to diabetes is not giving you the confirmed test. So इसका मतलब क्या हुआ? टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन कंडीशन जो है वो पॉजिटिव है. So it is called as false positive as per the test of the person. Now there is something called as false negative. टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, देन इट इज बेसिकली द नेगेटिव टेस्ट. इट इज ट्रू false negative. When I am saying true negative, test भी negative है and person is also not suffering from diabetes, then it is true negative. Clear हुआ? Yes, ma'am. Okay. Now let's see. अभी यहाँ तक देखते हैं, इसके बाद इसको एनालाइज भी करेंगे. जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, नाउ इट इज सेइंग 82, 15, 21 and 36. हाउ मेनी आर ट्रू पॉजिटिव? हाउ मेनी आर ट्रू पॉजिटिव? 863.63. कंफ्यूजन मैट्रिक्स सबको दिख रहा है ना? इट इज 82, 15, 21 and 36. हाउ मेनी आर ट्रू पॉजिटिव? 82. 82 are true positive. That means they are suffering from They are suffering from Diabetes. Diabetes. and the test is also saying it they're positive, that the test report is also coming out to be positive, Yes, and they are ma'am. suffering from diabetes. So that is something called as true positive. How many are true negative? 36. 36 are true negative. That means neither they are suffering from diabetes nor the test is saying so. Clear hua? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Now what about 15 and 21? What is 15? False positive. False positive. That means person is not Diabetic suffering. नहीं The है. person is not suffering. Exactly. So the person is not suffering from diabetes, but the test is positive. Fine. What about 21? False negative. False means- negative.
That means The test is negative, but the person is suffering from is diabetes. suffering from एग्जैक्टली diabetes. तो आई होप क्लियर हो गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है. तो नाउ अगर मैं इसको डायबिटीज के साथ ना कंसिडर करूं, अगर मेरे पास अगर ये मैट्रिक्स ऐसे के ऐसे आया और मुझसे कोई पूछे ओके अकॉर्डिंग टू यू पीपल यू व्हाट यू मीन बाय दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स, व्हाट इन्फॉर्मेशन दिस इज गिविंग, so I completely know the first row, that is 82 and 15. 82 belongs to the positive class and 15 belong to the negative class. So I'll simply say that 15 are misclassification. Getting my point? Out of true positive, 15 are misclassification. That means they might be positive, but they are showing a negative result. Clear हो गया class? Because they are false positive. Clear हुआ? फर्स्ट रो का मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये डेटा सेट अगर डायबिटीज के साथ ना लेके किसी और डेटा सेट के साथ कोलेट करूं तो मैं कैसे निकालूंगी मिसक्लासिफिकेशन क्या है. Am I making a sense? Or shall I repeat it again? Yes, first years. Yes. Okay. Second row, that is 21, 36. Now it is simply saying that 36 are belonging to the true negative class, but 21 are misclassification. That means they should be negative, but they are coming out to be positive. So that's the only reason they are called as a part of confusion matrix. होता है ना, अगर हम कहते हैं यार टेस्ट तो पॉजिटिव आया लेकिन हमें डिक्लेयर नहीं हुआ, या हमारा टेस्ट तो नेगेटिव आया बट आई एम हैविंग द सेम सिम्टम्स, ऐसे ही होता है ना जब हम कोई भी टेस्ट करा कर आते हैं जनरली. Yes, ma'am. Fine. So this is where this confusion matrix come into picture, and confusion matrix actually gives some more information into the system. So if I'll say the total number of samples will be TP plus FP plus FN plus TN. अगर इसका टोटल करके देखोगे तो ये उतना ही आएगा जितना तुम्हारा टेस्टिंग डेटा सेट था. क्लियर हुआ? Now let's talk Yes, ma'am. about what we mean by precision. So I am reading a statement. Just understand it. What proportion of positive identification was actually correct is being defined by precision. Again, I'm repeating, what proportion of positive identifications was actually correct is being defined by the precision. So for me or to the world, the precision is being defined as the proportion of positive class divided by the total positive value. Shall I repeat it again? What proportion of positive identifications were actually correct? Or I should simply say, कितना positive instance correctly identify हुआ है is being defined by the precision. Yes, ma'am. Clear हो गया? Yes, Can ma'am. I say that Yes, it can be written as Tn upon में Tn plus Fn? ये भी हो सकता है precision. Yes, ma'am. Exactly. So Yes, it can ma'am. be both. It can be both. It is both the both side. पॉजिटिव के लिए भी निकाला जाता है, नेगेटिव के लिए भी निकाला जाता है, बट जनरली वी हैव अ टेंडेंसी टू गो फॉर पॉजिटिव. अगर हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं और हमें लगता है हमें प्रॉब्लम है और डॉक्टर को भी लगता है देयर इज अ प्रॉब्लम, तो चांसेस क्या होगा, वो हमारे को रिपोर्ट पॉजिटिवली दिखाएगी, हाँ भाई प्रॉब्लम है. हम ये नेगेटिव होने के चांसेस कब रखते हैं? बिकॉज वी आर हैविंग दैट दो सिम्टम, वी आर सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज, वी ऑल्सो नो दैट. सो वी नीड नॉर्मली द पॉजिटिव प्रिसिशन. देन recall, I'll speak out again. What proportion of actual positives was identified correctly? So the formula is TP upon में TP plus FN. So again I am repeating, what proportion of actual positives was identified correctly? कहां से निकला? this will give you recall and this will give you precision. देख लो टीपी के साथ ही हो रहा है ना, कितना पॉजिटिव, एक्चुअल पॉजिटिव कहाँ है, यहां पर. तो
एक्चुअल पॉजिटिव में कौन सा आ रहा है? फॉल्स नेगेटिव। इसका मतलब उसको होना क्या चाहिए था? होना कौन सी क्लास में? Yes. उसको पॉजिटिव क्लास में होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? फॉल्स नेगेटिव। सो दैट्स द ओनली रीजन this value is basically your recall and these values are your precision. Clear hua class? Recall and precision. So please kindly write in your copies that these are the formulas to calculate precision and recall. किसी को अगर डाउट है तो भी पूछ लो. Okay. किसी को नहीं है? Now who will tell me what is F1 score? So if I'll say F1 score, तो F1 score का formula लिख लेते हैं पहले and then you will define it. F1 score is nothing but twice of recall times precision divided by recall plus precision. अब कुछ कोई बताना चाहेगा मुझे what exactly we mean by F1 score? Average of recall and precision. What exactly we mean by that? क्या क्या समझाऊं किसी को कि F1 का मतलब क्या हुआ? What exactly मतलब मेरे को तुम्हें ही बताना है. F1 निकाला ऐसा जा रहा है कि ठीक है precision and recall. So basically it is giving you something in terms of accuracy. Can I say that? Can I say that it will give you something called as accuracy? सोच लो, ध्यान से देख लो अच्छे से. So F1 score is nothing but the harmonic mean of precision and recall. लिख लो. F1 score is nothing but the harmonic mean of the precision and recall. And it actually this score actually this score actually is related to the in correspondence to every class. एक मिनट होल्ड करो. I'll just come back in a minute. Okay, class. Clear till this point? Yes, ma'am. Okay, so F1 score is nothing but the harmonic mean of precision and recall, and it actually helps you out for every class what accuracy could be. So basically the score corresponds to every class that will tell the accuracy of the classifier जो हम use कर रहे हैं for every data point. ठीक है? In another word, I can simply say that it actually is the support that the number of samples are true response that lie in that class. So basically कितने chances हैं कि जो हमारा output आ रहा है वो exactly मेरे actual के साथ आ रहा है, that will be given by the F1 score. So let's see what exactly we are getting into the system. So over here, see, precision is you 82%. That means 82% of the chances are there that the class 0 will be rightly predicted. Similarly, 67% is the chances of the model to predict class 1, and that to be the completely right prediction will be there. And if you see to your accuracy, see there is one more parameter, that is accuracy. This accuracy is coming out to be 77%. What this accuracy is telling you? क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है 77% से? बहुत आसान है, कौन बताएगा? सब कुछ तुम्हारे सामने है.
What is this accuracy? Okay, Akshita, are you there, Yes, beta? ma'am. Akshita, can you tell me what is this accuracy? Hmm. हाँ जी अक्षिता. कोई बताएगा मुझे? ओके. प्राची, नियति, एनीवन? व्हाट इज दिस एक्यूरेसी? मैंने मुझे बहुत बार सुना है एक्यूरेसी, एक्यूरेट. हाँ जी क्लास, एनीवन? So this accuracy is actually telling, see, F1 score individual class ही है, कितना accurately उस class को predict किया जा रहा है. Accuracy is for the complete data set. That means no matter whether the system belongs to class 0 or class 1, the model will predict 77% of the output or the prediction of that particular data set. The model will predict 77%. The accuracy is 77%. So that means 77% of the data points will be well matched with Y prediction and the Y actual. Remaining 23% are not well matched. Getting my point? So the accuracy is for the complete model. F1 score related to class 0 and class 1. Clear हुआ? Yes, class. Is it clear to everyone? Yes. Shall I proceed further? So I hope सबको clear हो गया what we mean by confusion matrix and what is the classification report. तो जनरली हम लोग क्या काम करते हैं, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं या डेटा साइंस जो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके लिए क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, F1 स्कोर इंडिविजुअली कैलकुलेट करना एंड द एक्यूरेसी, दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. ओवर हेयर मुझे अपने आउटपुट को वाई प्रेडिक्शन को देखने की जरूरत नहीं है. बाय लुकिंग दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स आई गेट टू नो कि ओके व्हाट विल बी द एक्यूरेसी. और क्लियरली अगर तुम देखना चाहो तो एक्यूरेसी अगर तुम्हें निकालनी है तो इट इज बेसिकली ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव. निकाल के देख लेना. इट इज कमिंग आउट टू बी 76 पॉइंट समथिंग. So confusion matrix से भी हम accuracy निकाल सकते हैं. So finally the accuracy for class 0 is 82%, accuracy for class 1 is 67%. अगर इन दोनों की averaging करके निकालते हो तो accuracy is coming out to be 74.6%. But the overall accuracy of the model is 77%. That means 77% of the total data set will be rightly predicted by the model. But remaining 23% will not be. Yeah, it is not due to some reason. And I'll let you know what are the possible reasons to that. यहाँ तक clear है? Shall I proceed further, class? Is it okay to everyone? Shall I proceed? Yes, ma'am. Okay, class. After this, I again called another classifier that is logistic regression. So class देख लो मैंने क्या करा है. वहां मैंने classifier नाम दिया था, यहाँ पे मैंने CLF2 ले दिया है. CLF2 logistic regression, CLF2 dot fit X train Y train, C predict CLF2. Ypred2 is equal to classifier. So over here it is not classifier, it is basically CLF2 because I am using that. Fine. And I didn't use y underscore pred. I had created another variable as y underscore pred2. So class just understand. ये जब ओवरराइट करता है ना, तो अगर सपोज मैं यहाँ पे y pred y अंडरस्कोर pred लेके चलती, तो ये y pred जो मेरा लास्ट मॉडल रहता उसकी वैल्यू को हर जगह पे कॉपी कर देता. वो मेरे लिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने अलग अलग सेट पे इसको सेव आउट किया है. So now if I'll run it, now I have the classification. So logistic regression print करने के लिए बोला हुआ है CLF2, तो मेरे पास उसकी सारी defaulted values आ गई जो जो argument उसने pass on किए थे. Now it's up to you whether you want to change something or not in these arguments. Fine. वो थोड़ा सा और आगे जाके पढ़ोगे ना तो अपने आप समझ में आएगा what exactly we mean by this C. C is basically hyperparameter. Random state मैं दे सकती हूँ यहाँ पे. Generally हम लोग random state क्या देते हैं? I'll tell you afterwards what exactly we mean by random state. सबसे लास्ट में बताऊंगी.
जनरली हम रैंडम स्टेट 142 देते हैं. रिस्पॉन्स कोई खास फर्क नहीं होता, बट स्टिल वी यूज टू गिव. पेनल्टी क्लास, आई होप सबको याद है, रेगुलराइजेशन हम लोगों ने किया था. lasso, ridge, elastic net. Yes, ma'am. So L1 is basically lasso, L2 is ridge and elastic net. So I can give a penalty also. So over here the penalty, मैंने क्लास में पहले भी बोला था कि पेनल्टी नॉर्मली हम लोग रेगुलराइजेशन अगर यूज करते हैं तो ज्यादातर हम कौन सी यूज करते हैं, रिज यूज करते हैं. सो ओवर हियर I'll simply go with L1. So now I have changed it. So now it is saying something. Solver LBFG supports only L2. So this is basically a solver. Solver का मतलब there are certain different kind of gradient algorithm जो हम लोग incorporate करते हैं so that the switching is very fast. Like in the sense कि हम local minima में बहुत जल्दी पहुंचे, उसके लिए हमें कुछ solvers की जरूरत होती है. So since the solver is over here LBFG, so that's the only reason we can't use L1 because by default it only uses L2. So it's up to you whether you want to change it or not. So over here, I'll just go with the random state and I am having an output like. So over here, see, it is 87, 36, 10 and 21 for logistic regression. But for the case of decision tree, it was coming out to be 82, 36, 15 and 21. Is it okay? Clear हुआ decision tree and logistic regression, confusion matrix? First years. Yes, ma'am. And if you'll see to the accuracy, over here it is coming out to be 77%, but over here the accuracy is being increased, it is 80%. वहां पर class 1 की accuracy was 66%, over here 61%, over here it is 70%. Clear हुआ class? कितना variation हो चुका है logistic में and decision tree में? I'll tell you afterwards why this difference is there. और सबके लिए बताऊंगी. Then I'll call another classifier as k nearest neighbor. I hope सबको याद है nearest neighbor की वैल्यू हम कितनी देते हैं, defaulted value. k की defaulted value कितनी होनी चाहिए, हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था, न्यूमेरिकल में 3 is defaulted value और 5 is defaulted value. हमने 3 इसलिए लिया था बिकॉज हमारे पास डेटा सेट में से 4 वैल्यूज थी. Yes, ma'am. Fine. So the defaulted values is 5. So over here k nearest neighbor we called off and n neighbor is nothing but the value of k. कि कितने neighbors मुझे count करना है. तो over here we just got for 3. And I hope मैंने explain भी किया था कि nearest neighbor कौन होते हैं, 2 या 4 ही होते हैं, 10, 20 नहीं होते. Getting my point? तो हमने यहाँ पर nearest neighbor की value दे दी है. So it is basically coming out to be 3 and defaulted value n neighbor is equal to कितना लिखा हुआ है क्लास, 5. So it is basically 5. So defaulted value is 5, else it is 3. Again we did what, हमने k nearest neighbor को fit किया, fit करने के बाद हम लोगों ने predict कराया, predict कराने के बाद we had a classification report. So let's see what exactly we achieved. So now there is again the same response is coming out. So it is coming out to be 82, 15, 21, 36. Accuracy is coming out to be 77%. Let's see if we'll change the nearest neighbor, any impact is being done. So let's see. With 5 neighbor, again it is coming out to be the same thing. Now over here, the accuracy is 76.66. That's the only reason यहाँ पे round off है. That is 77%. Let's check it out. अगर हम इसके nearest neighbor को 10 या 15 कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? This is how we actually work for. इसे हम कहते हैं ट्यून करना, अपने पैरामीटर्स को ट्यून करने की टेक्निक को क्या कहते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग. So now let's see what exactly we got. Again it is same. So neighbor कितने भी हो, the model is not being affected. Remember this. But ma'am, when we studied KNN, ma'am, you said that if the value of k is more than the value of k is more than the accuracy is less. That is the only thing, the accuracy is not changing. See, दिख रहा है ना, it is 77% only. I have a data ना, I have a data जिसमें मेरे सिर्फ 120, 160 points are in the testing points. The testing points are very limited.
If it is in the lakhs of data, then definitely it would have gone down and down. Yes, ma'am. क्लियर हुआ? सो दैट्स द ओनली रीजन. और देखो मॉडल पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है ना, तुम्हारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में वैल्यूज चेंज हो रही हैं. यू कैन चेक इट. सो दैट्स द ओनली रीजन आई पुट इट टू बी 3. कोई वेरिएशन नहीं है. हाँ, लेट्स सी, अगर हम इसको समथिंग 300 दे देते हैं, अगर उतना ही डेटा पॉइंट है, ठीक, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. It is almost same. Why it is same? Because the model is not having that much amount of data set. Lakhs में होता तो definitely बहुत drastically change दिखता तुम लोगों को. After this, we had gone with another kind of model, but now rather than creating the models, so class just understand. अगर तुमसे बोला जाए, okay, you have to perform linear regression model on a data set, तो क्या काम करना है? ये काम करना है. That you have to classifier को call करना है, linear regression, fit करना है, predict कराना है. But if I'll ask you, okay, fine, I have 5 models and I want to know the accuracy of each model, then what I have to do? अब मैं हर बार तो ये काम नहीं कर सकती ना. पहले मैंने लीनियर रिग्रेशन के लिए कोड लिखा, फिर मैंने लॉजिस्टिक के लिए लिखा, फिर मैंने डिसीजन ट्री के लिए लिखा, फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन के लिए लिखा. सो व्हाट आई डिड, आई एक्चुअली क्रिएटेड अ लिस्ट. बेसिकली मैंने एक मॉडल बनाया, एम्प्टी, उस मॉडल को एम्प्टी लिस्ट पास ऑन की, एंड मैंने उसके बाद लिस्टिंग दे दी कौन कौन से मॉडल्स को मैं कॉल करने वाली हूँ. एंड सेम फंडा, जो फिट करना है, देन पहले ट्रेन कराना है, देन फिट करना है, और उसके बाद प्रिडिक्ट कराना है. वो काम करने के लिए मैंने उसको एक ही फॉर्मुलेशन समझा दी. एंड आफ्टर दैट वो मैंने उसे समझा दिया है कि मुझे आउटपुट कैसा चाहिए. तो आई क्रिएटेड सम एम्प्टी लिस्ट, एंड मैंने उन एम्प्टी लिस्ट के अंदर वो सारी वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कहा. सो व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड अ एम्प्टी लिस्ट ऑफ मॉडल. उस मॉडल में मैंने क्या, मुझे क्या चाहिए थी उनकी लिस्ट, मैंने क्या क्या बोल दिया, मॉडल्स डॉट अपेंड. अपेंड का मतलब क्या होता है क्लास? विल टेल मी अपेंड. I'm adding an element to list. Adding an element. So now what we are doing, मॉडल में आप ऐड कर दो किसको, KNN को, जो कि क्या है, K नेबर क्लासिफायर है. तो व्हाट आई डिड, मैंने क्लासिफायर को यही कॉल कर लिया और उसका जो नाम था वो भी मैंने वहां डिफाइन कर दिया. सो नाउ KNN जब भी दिखेगा उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा K नियरेस्ट नेबर है. अगेन आई रोट मॉडल्स डॉट अपेंड SVC, विच इज नथिंग बट सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर. एंड कहाँ से कॉल किया है, SVC, जो कि लाइब्रेरी फंक्शन है. I appended logistic regression again by LR, DT as decision tree classifier, RF is random forest classifier. अभी के लिए random forest सिर्फ याद रख लो, कल की क्लास में random forest क्लियर हो जाएगा. तो RF is random forest. After that what I did, I tell the model that you have to split your data in this manner. So over here defaulted value of random state is 1. यहाँ मैंने 0 दी हुई है, that is up to you whether you want to change it or not. So I'll give it to 123. दिस इज अनदर रैंडम स्टेट जो हम देते हैं. उसके बाद हम लोगों ने 2 चीजें और क्रिएट की. तो क्लास मैंने क्या कहा था, आई वांट यू टू परफॉर्म ऑन द डेटा सेट 5 डिफरेंट मॉडल्स एंड आई वांट यू टू गिव मी द एक्यूरेसी ऑफ ईच मॉडल. तो एक तरीका तो ये है कि मैं सबका अलग अलग मॉडल बनाऊं और मॉडल बना करके फाइनली सबकी एक्यूरेसी लिख के दे दूं कि हाँ जी ये आई है. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या है, मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, एक लिस्टिंग बनाती हूँ जहाँ मैं मॉडल्स को कॉल करती हूँ और मैं कहती हूँ नेम के सामने उसकी एक्यूरेसी आ जाए. तो व्हाट आई डिड, आई सिंपली डिड दिस सेकंड ऑप्शन, जहां मैंने कहा नेम, नेम में क्या आ जाएगा, मॉडल के नाम, एंड स्कोर, स्कोर के अंदर क्या आ जाएगा, उसकी एक्यूरेसी. क्लियर हुआ? नेम एंड स्कोर की एम्प्टी लिस्ट का मतलब क्या हुआ है, यहां तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. फाइन. आफ्टर दिस आई क्रिएटेड अ लूप जहां मैंने उसको समझा दिया है कि हर मॉडल के लिए करना क्या है. क्या करना है, मॉडल का नाम और कौन से और कहां से उठाना है, मॉडल्स में से उठाना है. सो इट सेज फॉर नेम मॉडल इन मॉडल्स, मॉडल डॉट फिट करना है. तो सबसे पहला काम क्या था, फिट करना है, फिर प्रिडिक्ट करना है, और उसके बाद आपको क्या निकालनी है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्यूरेसी निकालनी है. सो हमने क्या करा, हमने कहा फॉर नेम मॉडल इन मॉडल्स, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, वाई प्रिड इज इक्वल टू मॉडल डॉट फिट एक्स टेस्ट, scores dot append accuracy underscore score y test y prit. Now please understand, this accuracy is called from the sklearn package and the library was the metric, because now it is giving you some measure या फिर कुछ quantity दे रहा है in numbers. So इसे हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, मेट्रिक में से कॉल कर रहे हैं. After this I'll set
name dot append. So now it will be calling the name. हर नाम के लिए मॉडल जो कि मॉडल से डिफाइंड है इन द मॉडल्स, वहां पर हर नाम के लिए ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के स्कोर्स को कैलकुलेट करेगा एंड आफ्टर दैट वो किसमें अपेंड कर देगा, नाम के साथ उसे अपेंड करेगा. नाउ देयर इज अनदर वेरिएबल दैट इज tr_split in which what I am doing, I am actually creating a table जिसमें मैं उसे बता रही हूँ कि पहले नाम होना चाहिए फिर उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर होना चाहिए. तो मैंने उसे क्या कहा, डेटा फ्रेम क्रिएट करो by the column first value as names जिसमें name will be defined and scores जिसमें scores will be calculated. तो name and score की जो empty list है वो यहाँ पर उन parameters को call कर लेगा and finally I'll ask to print it out. So after printing, after running this cell, what I am getting is, so these are basically the warnings at times, so don't think about it. So now over here there is name and scores. So it is saying KNN is having 74%, SPC is having 77%, logistic regression is having 79%, decision tree 75%, random forest 80%. Out of these 5 models, which one is better? Random forest. Random forest. And which one is the least that is being used? KNN. एंड आई होप सबको याद होगा जब मैंने नेव बायस कराया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कराया था और जब KNN कराया था, आई टोल्ड यू KNN इज वेरी लीस्ट यूज्ड इन टुडेज एरा. ऐसा नहीं कि नहीं यूज किया जाता, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी सारे मॉडल के कंपैरिजन में KNN सबसे कम यूज किया जाता है. आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स व्हाई दिस, हर चीज में क्या क्या प्रॉब्लम है कि एक्यूरेसी बेटर क्यों नहीं आई है और बेटर हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अभी बताऊंगी. लेकिन बिफोर दैट लेट्स गो फॉर वन मोर मॉडल. नाउ अगेन व्हाट आई डिड, एक तरीका होता है जैसे ये ज्यादातर यूज किया जाता है. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, आई टोल्ड यू दैट आई विल टेल यू व्हाट वी मीन बाय क्रॉस वैलिडेशन स्कोर एंड के फोल्ड अभी जब मैं करा रही थी. तो लेट्स गो विद दिस. दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट आई विल बी कवरिंग in case of practicals. Okay, so class, I have a training set and I have test set. एंड क्लास ये दोनों के दोनों ना एक ही चीज को बिलोंग करते हैं, दैट इज डेटा सेट. इज इट ओके, क्लियर है ये पॉइंट? Yes, ma'am. Fine. Now its defaulted value is 80% and 20%. So we know what we mean by 80% and 20%. Then it is 70% and 30%. But we rarely use something called as this and this. ये बहुत कम हम नहीं यूज करते हैं, ज्यादातर हम ये वाली वैल्यूज का यूज करते हैं. So now just understand the concept. There is one more thing जिसे हम कहते हैं validation set. Let's talk about it. What we mean by this. So class, I have a training set. ठीक है, अभी कंप्लीट ट्रेनिंग सेट, ये कंप्लीट डेटा सेट है. सॉरी, इस डेटा सेट के लिए मैंने अगर बोला कि आई वांट टू स्प्लिट दिस डेटा सेट इनटू दिस 80% and 20%. So I know this is my training and this is my testing. हर बार हम क्या काम कर रहे थे, हमने सबसे पहले फंक्शन कॉल किया, क्लासिफायर कॉल किया, फिर फिट किया और फिर हमने टेस्ट किया. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफायर कॉल किया, इसको फिट कराया ट्रेनिंग को एंड देन उसके बाद हमने टेस्टिंग कराई. यही कर रहे थे? यस और नो? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. नाउ इफ आई से दैट अगर मैं अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को ही कुछ बैचेस में डिवाइड कर दूं, 1 2 3, so I'll this is my first set, second set, third set, fourth set. और उसमें मैंने बोल दिया कि that these 3 set will be for training and this fourth set will be for validation. So we'll talk about it. So यहाँ पर जब हमने ट्रेनिंग सेट के अंदर ही मैंने डिफाइन करा है. सो नाउ दिस इज माय ट्रेनिंग सेट. ये क्या काम कर रहा है और क्यों किया जा रहा है मैं बताती हूँ. नाउ दिस ट्रेनिंग सेट इज 80%. अब इस 80% में भी मैंने इसे फर्दर डिवाइड कर दिया दैट 60, लेट इट बी नॉट 60,
let's go with 70% is the training set and remaining 10% is the validation set. यहां तक क्लियर है? बताऊंगी अभी वैलिडेशन क्या काम करता है. ये क्लियर हुआ? ये ट्रेनिंग सेट कैसे डिवाइड हुआ ये समझ में आ गया? ये कंप्लीटली 80% ही है, ये पूरा का पूरा है ट्रेनिंग सेट ही, लेकिन इस ट्रेनिंग सेट में हमने ये डिफाइन कर दिया कि 70% तो ट्रेनिंग के लिए बिलोंग कर रहा है, रिमेनिंग 10% वैलिडेशन के लिए. टोटल तो 80% ही हुआ ना? Yes, ma'am. Now, अब इसका मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ. ओके, राइट नाउ कितने स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में? लेट मी चेक. एंड क्लास अगर नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर तुम डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो. सो राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट 30. फाइन. अब 30 में से इफ आई से प्राची, अक्षता, जूही, नियति एंड सुरभि, कितने हो गए? 5 स्टूडेंट्स. फाइन. I'll divide your class strength that is 30. इस 30 की क्लास स्ट्रेंथ को मैं डिवाइड कर रही हूँ और इसको इस तरीके से डिवाइड कर रही हूँ कि आई एम हैविंग ओनली 20 स्टूडेंट्स फॉर माय ट्रेनिंग एंड 10 स्टूडेंट फॉर माय टेस्टिंग. ये डिवीजन तो सबको क्लियर हो गया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग. सो डेटा साइंस इज द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम and 30 out of 30 is the complete data set. 20 belongs to your training set and 10 belongs to your Testing set. fine. Now what I did, I'll split my training set again into 2 different sections. First one for the training and another one for the validation. Now just understand why I am doing. जब हम सबसे पहले का केस कर रहे थे जहां हमने सिर्फ ट्रेनिंग और टेस्टिंग को डिफाइन करा, तो मैंने क्या कहा, मॉडल को ट्रेन कराओ और मैंने कहा कि टेस्टिंग डेटा को बुलाओ और उस पर इंप्लीमेंट करके देखो कि कितना परसेंट वो सही आंसर दे रहा है. ठीक है ना? लेकिन हर बार अब कहीं ना कहीं तो चांसेस ऑफ एरर दिख रहा है ना हमें कि 77% आ रहा है डिसीजन ट्री का, KNN का 74% आ रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन 78%, रैंडम फॉरेस्ट 80%. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ट्रेनिंग कराई और मैंने टेस्ट दे दिया. क्या तुम्हारा जब एग्जाम होता है, जब हम तुम्हें 4 months फॉर अ सेमेस्टर पढ़ाते हैं, तो क्या हम डायरेक्टली तुम्हारे को फाइनल एग्जाम का पेपर देते हैं? यस क्लास? No, ma'am. No, ma'am. नहीं ना. तो हम क्या काम करते हैं, हम कैसे करते हैं तुम्हारे को प्रिपेयर? हम इन बिटवीन टेस्ट देते हैं. एग्रीड? सो अब मैंने क्या काम करा, ये पहले वाले स्लॉट को हटा करके, नॉर्मली ऐसे ही होता है लेकिन अब हमने एक और चीज ऐड कर दी. हमने कहा जो जिन पर हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं उसमें से कुछ सेट को हम वैलिडेशन के लिए रख देते हैं, सो दैट जब हम टेस्टिंग कराएं तो हमें पता चल जाए कि हमारा ट्रेनिंग मॉडल कितना परफेक्टली काम कर रहा है. तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ट्रेनिंग की एक्यूरेसी को वेरीफाई कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं. अगर ट्रेनिंग ठीक हुई है तो टेस्टिंग तो परफेक्ट होगी. ऐसे ही मुझे भी पता चलेगा ना मेरे स्टूडेंट के बारे में कि अगर मैं तुम्हारा हर वीक टेस्ट लेती जाऊं और मेरे पास तुम्हारा रिजल्ट हर बार अच्छा आता जाएगा, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ फाइनल एग्जाम तो ये बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे. गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर मैं तुम्हारा एक भी टेस्ट ना लूं और सीधा फाइनल एग्जाम में तुम्हारा एग्जाम हो, तो मैं कैसे प्रेडिक्ट करूंगी कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो जो काम Yes, मैं ma'am. ट्रेनिंग और टेस्ट के लिए कर रही थी, अब मैं वही काम ट्रेनिंग और वैलिडेशन के लिए कर रही हूँ. नाउ वैलिडेशन नाम क्यों है? आई सेड 30 स्टूडेंट, 10 for testing, 20 for training. Then I said now from training 15 are meant for testing and remaining 5 are for validation. क्लियर हुआ? 5 स्टूडेंट्स के मैंने नाम लिए और मैंने उन्हें बोला दे बिलोंग टू वैलिडेशन सेट, रिमेनिंग 15 आर फॉर ट्रेनिंग. अब मैंने क्या करा, मैंने ट्रेनिंग करानी शुरू करी, तुम्हें समझाना शुरू किया. फाइन. तुम्हें पढ़ाना शुरू किया उन 15 को. और ये जो 5 जिनका मैंने नाम लिया है, ये मैं मान के चल रही हूँ कि दे आर ऑल्सो, मैंने 20 के 20 को ट्रेनिंग करना शुरू किया, लेकिन आई जस्ट क्रिएटेड दीज 5 फॉर द वैलिडेशन. दैट मीन्स whenever I'll ask something, I know that these 5 will be responding. Getting my point? समझ रहे हो? Yes, ma'am. इसका मतलब क्या हुआ, मेरी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी क्या हो गई है? बेटर हुई है, वर्स्ट हुई है, कैसी हुई है? Better. इट इज बेटर. इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मेरे पास मैंने फर्दर और ट्रेनिंग कराया और पूरे 20 को और मैंने फिर क्वेश्चंस पूछे, then again I got to know the validation set is responding. इसका मतलब क्या हुआ, the training is going on and on and on and the accuracy is increasing. If my accuracy of training data set is somewhere around 80 or 90%, I can simply say no matter whatever testing set will come,
my model will predict something greater than 80%. Can I say that? अगर तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है तो मैं कह सकती हूँ ना कि तुम्हारी टेस्टिंग भी ठीक होगी. इसको इस तरीके से लेके चलो, जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो पूरे साल अगर ट्रेनिंग करते हैं तो वी नो एट द टाइम ऑफ द कॉम्पिटिशन दे विल एक्चुअली गिव अ बेटर रिस्पॉन्स. एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही हो रहा है. तो ये होता है वैलिडेशन का काम. तो हम क्या काम करते हैं, हम ट्रेनिंग वैलिडेशन टेस्टिंग बोलते हैं. हम कभी भी ट्रेनिंग टेस्टिंग डायरेक्टली नहीं बोलते. जैसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करता है ट्रेन और टेस्टिंग सेट में, वैसे ही ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ट्रेनिंग सेट को टेस्ट ट्रेनिंग और वैलिडेशन में स्प्लिट करता है. तो जहां मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में टेस्टिंग साइज दे रखा है 0.2, तो ऑटोमेटिकली वो काम क्या करेगा कि वो ट्रेन और टेस्ट को 20% में डिवाइड कर देगा. तो टेस्टिंग इज 20%. नाउ इफ आई कॉल अनदर सेम थिंग x अंडरस्कोर ट्रेन, x अंडरस्कोर वैलिडेशन, y अंडरस्कोर ट्रेन, y अंडरस्कोर वैलिडेशन, तो ऑटोमेटिकली मेरे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को पता चल जाएगा दैट नाउ दे आर डिवाइडिंग द ट्रेनिंग सेट इनटू ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन. एंड आई विल कॉल train test split test size is equal to 0.2. So what I did, out of 80%, 20% is for validation and remaining 60% is for training. Fine. And after that what I'll do, I'll simply call the prediction. Prediction भी उसी तरीके से होगी जैसे अभी हो रही थी. So what I'll do, I'll say 80% ये था and 20% ये था. सबसे पहला स्प्लिट मैंने ये किया. सेकेंड स्प्लिट में मैंने कहा 60% मेरा ये था एंड 20% मेरा वैलिडेशन हो गया. So now what I'll do, I'll simply say CLF is equal to logistic regression bracket. Next statement will be my CLF dot fit. I'll, rather than saying it to be X train comma Y train, this is my fitting. Now when I have to predict, so it will be y underscore val is nothing but CLF dot predict x underscore val. क्लियर हुआ? और उसके बाद जब मुझे एक्यूरेसी स्कोर निकालना है, देन आई विल सिंपली से स्कोर इज इक्वल टू एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर. It will be your y underscore val and I'll simply say y underscore val 1 कर देते हैं, comma y underscore val underscore 1 which is the predicted. Now यहाँ पे जो accuracy अगर मेरी आती है वो आती है 85%, 0.85. So now this is the accuracy of the training set. That means training set has been giving us the perfect or the better prediction for the training set only. Now after I'll do the same process. अब यहाँ पर क्या था, CLF यहाँ पर y well निकलता, अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ y underscore pred is equal to CLF dot predict x टेस्ट. सो यहाँ पर वो क्या काम करेगा, यहाँ पर जो प्रेडिक्शन यहाँ पर जो करा था वो 20% के लिए किया था, यहाँ पर जो कर रहा है वो 20% कौन सा है, टेस्ट के लिए किया है. नाउ आफ्टर दिस इफ आई कॉल द स्कोर अगेन, आई विल चेक इट आउट. सो आई विल राइट इट लाइक स्कोर इज इक्वल टू एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर between y test comma y pred. So now if the accuracy is coming out to be 84%, so I can simply say that they both are well matched. So now it is very much confirmed कि ट्रेनिंग सेट परफेक्टली ट्रेन्ड था, इसी वजह से हमारी एक्यूरेसी ऑफ द टेस्टिंग इज कमिंग आउट टू बी द सेम वन. दो 84 एंड 85 इज नॉट वेरी गुड, डेफिनेटली आपको इसको इंक्रीज करना पड़ेगा. यू हैव टू गो फॉर द हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, बट इफ दे आर कमिंग आउट टू बी द सेम, देन वी कैन सिंपली से दैट द मॉडल इज द परफेक्ट वन. क्लियर हुआ? या एक और एग्जांपल लेके बताऊं जो कि तुमने अभी करा है? यहां तक क्लियर है क्लास? Yes, first year, please, jaldi se. Is it clear to everyone?
मैम डेटा सेट से बता दीजिए। क्या कह रहे हो बेटा? एक बार फिर से बता दीजिए, मतलब डेटा एक बार। फिर से चलिए, अब प्रॉपरली वैलिडेशन के साथ बताती हूँ, तुम ही लोग आंसर करोगे। कल मेरा टेस्ट किस किस कौन कौन से स्टूडेंट्स ने दिया है? सबने दिया था? Yes, ma'am. ओके, नाउ एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो आप लोगों की ट्रेनिंग हुई थी पहले उस टेस्ट को लेकर के? Yes, ma'am. Fine. So जब मैंने आप लोगों की ट्रेनिंग कराई और मैंने आपको टेस्ट दिया डायरेक्टली, तो दैट इज बेसिकली ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस नहीं देखी है कि मैंने तुम्हारे को प्रॉपरली ट्रेन कराया था या नहीं कराया था, मैंने सीधा तुम्हें टेस्ट दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे को प्रिडिक्शन है मेरी तरफ से कि हाँ ये स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ये मुझे कंफर्म कब होगा कि उन्होंने सही स्कोर किया, उतना ही स्कोर किया या नहीं किया जितना मैंने सोचा था? ये कब होगा कंफर्म मुझे? Answer sheets देखकर। आंसर शीट, दैट मीन्स जब तुम्हारे मैं मार्क्स वेरीफाई कर रही होंगी तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि जो मैंने सोचा था प्राची के लिए वही प्राची के मार्क्स आए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? या जो मैंने संपदा के लिए सोचा था वैसा ही मार्क्स संपदा के आए हैं। सो आई विल सिंपली से यस, फॉलिंग फॉर द एक्यूरेसी अगर मैं देखती हूँ तो आउट ऑफ 30 इफ 28 और आई शुड से 15 गॉट द सेम मार्क्स, आई विल से 50% एक्यूरेसी इज देयर। लेकिन अगर मैं कहती हूँ 28 स्कोर द सेम आउटपुट जो मैंने सोचा था पूरी क्लास के लिए एंड 2 डिडंट गेट, सो दैट इज 98%, देन आई कैन सिंपली से द एक्यूरेसी इज वेरी हाई। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब Yes, ma'am. अब मैंने दूसरा काम किया, अब ये तुम सब जेन्युइन आंसर करोगे, ठीक है, तभी समझ में आएगा। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कराई लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन पे। Yes, ma'am. मैंने एक असाइनमेंट दिया तुम लोगों को करने के लिए कि बिफोर टेस्ट काइंडली गो विद दिस असाइनमेंट फर्स्ट, परफॉर्म दिस असाइनमेंट फर्स्ट। नाउ दिस इज समथिंग डूइंग द वैलिडेशन। क्योंकि अगर तुम, और मैंने साथ में एक और चीज बोल दी, अगर तुमने ये असाइनमेंट पहले ठीक से कर लिया तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट क्विज तुम्हारे लिए आ रही है तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के पार्ट में से ही कुछ पार्ट वैलिडेशन के लिए रख दिया है। अब ये वैलिडेशन तुम्हारे कल के टेस्ट के हिसाब से बात करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे से आंसर्स कंफर्म किए थे? लेट इट बी द जेन्युइन वन, रैंडमली बोल दो कि हाँ मैम मैंने पूछा था एक आध क्वेश्चन, नॉट अ प्रॉब्लम, आई ऑल्सो नो किस किसने किया है। तो आई अज्यूम होल ऑफ द क्लास, कैन आई से दैट? आंसर तो करो एटलीस्ट, आंसर करोगे तो वैलिडेशन समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। अच्छा चलो, कोई ऐसा है जिसने प्राची से या नियति से या अक्षता से, जूही से, सुरभि से क्वेश्चंस पूछे थे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, या टेस्ट सबमिट करने के बाद पूछा हो? अच्छा किसी ने नहीं करा, वेरी गुड। क्लास गिव मी सम जेन्युइन आंसर, आई एक्चुअली वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। Yes, ma'am. पूछा था बाद में. किस ओके किससे पूछा था? प्राची, नियति, संपदा, जूही, अक्षिता, सुरभि, किससे पूछा था? मैम अरे प्राची ने मुझसे पूछा था टेस्ट के बाद। प्राची ने किससे पूछा था? सुरभि से। हाँ, टेस्ट के बाद। प्राची टेस्ट के एग्री, चलो टेस्ट के बाद पूछा था। प्राची डिड यू गेट सम कंफर्मेशन फ्रॉम सुरभि? ओके फाइन, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस वन। No, ma'am. I had submitted already. नहीं दैट्स ओके, दैट्स ओके, यू टेस्ट के बाद। टेस्ट के बाद की बात कर रही हूँ। क्लास सब सुनना है हाँ, चीज। it was right. I just said कि you marked this. You just checked it. So class, what Prachi did? प्राची ने वैलिडेशन अप्रूव किया है, सुरभि ने वैलिडिटी कंफर्म की है, जबकि दोनों को सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन मिले थे, सेम अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग मिली है। गेटिंग माय पॉइंट? सो एक्चुअली क्या हो रहा था, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज वैलिडेशन, दैट प्राची ने सुरभि से पूछा, सुरभि ने कंफर्मेशन कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि हाँ जो तूने लिखा है वो आंसर सही है। दिस इज वॉट एग्जैक्टली। अब अगर सुरभि परफेक्ट मॉडल नहीं होती तो क्या सुरभि प्राची को वेरीफाई करके बता सकती थी कि आंसर सही है या गलत है? ये सुरभि नहीं? नो हाँ मैम। मैम, नहीं बता पाती मतलब। एग्जैक्टली, सो दिस इज वॉट एग्जैक्टली योर मॉडल डज। मॉडल ने कहा मैं पहले ही अपने आप को वेल ट्रेन प्रूव करूं, तो उसको अपने आप को वेल ट्रेन कैसे प्रूव, वो कैसे प्रूव करेगा? वो तभी प्रूव कर सकता है जब अपने कुछ सेट ऑफ सेक्शन को वो कहे कि तुम मेरे पास एज अ टेस्टिंग आ जाओ, पहले तुम मुझसे टेस्ट करा लो अपने आप को। अगर मैं तुम्हारी वैल्यूज को सही प्रेडिक्ट करा सकता हूं तो आई कैन सिंपली से दैट आई एम परफेक्टली ट्रेन्ड, एंड आफ्टर दैट जो भी मेरा टेस्टिंग सेट आएगा आई विल वर्क अकॉर्डिंगली। दिस इज व्हाट वी सिंपली कॉल इट एज वैलिडेशन। क्लियर हुआ वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ? Yes, ma'am.
I Yes, hope yes. everybody got to know what we mean by train, validation, and test. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So after this, यहाँ पर हम लोगों ने काम यही किया है कि we did यहाँ पर. So यहाँ पर ये जो क्रॉस वैलिडेशन है, पहले वैलिडेशन हमें क्लियर हो गया है. Now there is one more word, that is k fold. Over here there is name and score. वो तो ऊपर वाले से ही आ रहा है. For name, model in models, ये भी ऊपर से आ रहा है. Now we calculated two different parameters. वहां पर हम लोगों ने name के लिए कैलकुलेट किया था, यहाँ पर हमने कहा है k fold. k fold के अंदर हमने एक पैरामीटर, एक फंक्शन कॉल किया है कैपिटल K कैपिटल F वाला, दैट इज k fold n splits random state is equal to 10. एंड आफ्टर दैट वी कैलकुलेट, जब भी हम k fold करते हैं तो हम क्रॉस वैल स्कोर करते हैं. आई टेल यू नाउ व्हाट इज दिस क्रॉस वैल स्कोर. ओके, बट बिफोर दैट k fold क्या काम कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं. क्रॉस वैल स्कोर के अंदर हमने कुछ पैरामीटर्स पास ऑन किया. फर्स्ट वन इज द मॉडल, तो इसका मतलब पहला उस मॉडल का नाम आएगा. देन x and y आर बेसिकली दी योर फीचर्स एंड योर लेबल्स. तो बेसिकली कौन कौन से एट्रीब्यूट्स उसमें आ रहे हैं और उसका लेबल क्या है. सी फोल्ड इस क्रॉस वैलिडेशन फोल्ड, so वो बेसिकली के फोल्ड से निकाला जा रहा है, दैट इज 10 स्प्लिट्स. स्कोरिंग क्या कैलकुलेट की जा रही है, दैट इज बेसिकली एक्यूरेसी. सो रादर देन गोइंग फॉर एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, हमने यहाँ पर डायरेक्टली इसी के अंदर ये पैरामीटर दे दिया. तो जनरलाइज वे में हम स्कोर हमेशा क्रॉस वैल स्कोर के साथ निकाल लेते हैं क्योंकि पूरा पैरामीटर वहां से आ जाता है. लास्ट में नेम डॉट अपेंड इज नेम, स्कोर डॉट अपेंड इज स्कोर. सेम फॉर्मेट में हम लोगों ने डेटा फ्रेम बनाया. डेटा फ्रेम बनाने के बाद हमने उसे बोला कि एक बार शो कर दो कि एक्यूरेसी और ये सब क्या आ रहा है. सो वी गॉट समथिंग लाइक this is the last thing that I am going to do. So this is what we are getting. So KNN के लिए it is coming out to be 74, SVC के लिए 76, LR के लिए 77, TT के लिए 68 एंड RF जो कि 80 आ रहा था वहां पर, यहाँ पर आ रहा है 77. Now this is something called as crosswell. And last thing, I plotted it also. So over here मैंने ये प्लॉट किया है. तो बार प्लॉट में मेरे मॉडल की, सारे मॉडल्स के नाम, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्यूरेसी मैंने यहाँ पर प्लॉट करके देख लिया. सो आई गॉट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली द एक्यूरेसी. सो इट इज वेरी क्लियर टू समवन जिसने मुझे बोला कि भाई आपको मेरे को 5 मॉडल की एक्यूरेसी निकाल के दिखानी है. मैंने एक्यूरेसी निकाल के दिखा दी. इस मॉडल इस विजुअलाइजेशन से बहुत क्लियर हो गया मुझे विच वन इज द बेटर मॉडल. So RF is the better model. After that, it is my logistic regression, then SVC, then my KNN, and lastly it is decision tree. Now let's go for what we mean by the k-fold. This is the last topic. Now again I have my data set, I have training set, and we are working for k-fold. उसमें एक चीज है n split, जिसको हमने कहा 10. मैं 10 के साथ काम नहीं कर रही हूँ, मैं 4 के साथ काम कर रही हूँ बिकॉज मुझे समझाना है. सो व्हाट आई डिड, मैंने अपने ट्रेनिंग सेट को ना डिफाइन कर दिया है 4 सेक्शन में. सो लेट इट बी द इक्विवेलेंट 1, 1, 2, 3 and 4. So this is my first, second, third and fourth. So class, this is my training set. 80%. मैंने पूरे 80% ऑफ डेटा को स्प्लिट कर दिया है 4 इक्वलेंट हाफ में. So if I'll say I have 200 data points in my training set, so कितना हो गया 4 सेक्शन में. हर सेक्शन के अंदर, हर स्प्लिट के अंदर, हर नंबर के अंदर कितने कितनी वैल्यूज आ रही. सो नाउ इट इज 50, 50, 50 एंड 50. जब ये प्रोसेस करेगा तो ये कैसे प्रोसेस करेगा, पहली बार में ये 50 लेके जाएगा, नेक्स्ट टाइम पर ये 50 जाएगा, नेक्स्ट टाइम पर ये वाला 50 जाएगा एंड लास्ट वाले में ये वाला 50 जाएगा. नाउ देयर इज समथिंग अनदर थिंग. अब ये हुआ के फोल्ड, अभी तो ये एक ही फोल्ड हुआ है, स्प्लिटिंग मेरी 4 के साथ हुई थी. अब मैंने कितनी बार इसको चेंज करा है, तो पहली बार में 1 गया, 2 गया, 3 गया. तो बेसिकली फर्स्ट टाइम में तो 1 गया, देन इट इज 2, देन इट इज 3, देन इट इज 4. सेकंड फोल्ड में क्या जा रहा है, पहले जा रहा है 2, देन सॉरी फिर जा रहा है 2, देन 3, देन 4, देन थर्ड में क्या जाएगा 3 एंड 4 एंड देन लास्ट में क्या जाएगा. दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज के फोल्ड. सो के फोल्ड के अंदर हमने क्या वैल्यू दे रखी है, हमने कह दिया के फोल्ड इज इक्वल टू 5 या 4. तो नाउ इट इज बेसिकली दिस इज फर्स्ट फोल्ड, this is second fold, this is third fold and this is fourth fold. This is something called as k fold.
क्लियर हुआ क्लास? यस मैम। बेसिकली कंप्लीट सेक्शन को एक साथ ना भेज करके हमने उसे बोला कि तुम कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स को लेके जाओ, बैचेस में जाएगा, ठीक है? सो इट इज गोइंग इन बैचेस नाउ। क्लियर हुआ यहां तक? Yes, ma'am. मैम Fine. एक बार हाँ जी बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? मैं यही चीज रिपीट कर दीजिए एक बार हाँ, मैं बिल्कुल रिपीट करती हूँ। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हमने के फोल्ड बुलाया। के फोल्ड इज अ मैकेनिज्म जिसमें बेसिकली हम फोल्डिंग ऑफ डेटा कर रहे हैं। फोल्डिंग का मतलब बैचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो के फोल्ड अगर मैंने कह दिया के फोल्ड इज इक्वल टू, सपोज मैंने कहा के फोल्ड इज इक्वल टू 6, तो बेसिकली मेरे पूरे डेटा सेट की फोल्डिंग, ट्रेनिंग डेटा सेट की जो फोल्डिंग होगी वो होगी 6 टाइम्स। और मैंने उसके अंदर बोला जो स्प्लिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10। n स्प्लिट इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट डेटा सेट को के अंदर मैंने 10 डिफरेंट स्प्लिट्स बना दिए हैं। अब अगर 200 था तो 10 के अकॉर्डिंग हर डेटा पॉइंट कितने होंगे, हर चीज, हर उसके अंदर कितने डेटा पॉइंट्स होंगे? 20. 20. So it will be first batch will be having 20, next batch will be having 20, another batch will be having 20. Now mind it, suppose ये 200 की बजाय 199 होता तो जो मेरा 10th डेटा बैच बनता उसके अंदर कितने जाते? 19। तो इट विल नॉट से कि मैं 10th वाले बैच को प्रोसेस ही नहीं करूंगा, जितना डेटा सेट था उसके अकॉर्डिंग उसने स्प्लिटिंग कर दी। फाइन, सो दिस इज नाउ स्प्लिटिंग, बट मैंने क्या कहा है, के फोल्ड बना के रखा हुआ है। So k fold is 6, तो कंप्लीट एक साइकिल के अंदर पूरा डेटा सेट जाएगा। सो इट इज 1 2 3 4 2 3 4 3 4 देन 4। तो 6 टाइम, अगर 6 टाइम्स के फोल्ड हो रहा है तो फर्स्ट के फोल्ड में सारा जाएगा, फिर नेक्स्ट के फोल्ड में सारा जाएगा, फिर थर्ड के फोल्ड में सारा जाएगा। ये प्रोसेस जो होता है इसे हम कहते हैं के फोल्ड टेक्निक। इट इज अ मैकेनिज्म। क्लियर हुआ? सारे बैचेस के टाइम्स फोल्ड होंगे। एग्जैक्टली समझ में आ गया? ठीक है, अब कोई मुझे बता सकता है इज इट बेनिफिशियल टू हैव इट और इट शुडंट, वी शुडंट यूज इट? मैम टाइम टेकिंग नहीं होगा? तुम्हारे सामने है, मैंने अभी रन किया था। आई गेस नेक्स्ट टाइम मैं अगर प्रैक्टिकल अभी नहीं करा पाई तो इन फ्यूचर अगर हम कभी कुछ करेंगे तो तुम्हारे को मैं टाइम भी दिखाऊंगी कि टाइम कैसे आता है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर स्प्लिट बोला हुआ है 10, तो ये आराम से काम कर रहा है। स्प्लिट भी 10 है, के फोल्ड इसने डिफॉल्ट वैल्यू ले रखी है। सो एन स्प्लिट 5 इज योर डिफॉल्ट वैल्यू एंड के फोल्ड उसके अकॉर्डिंग उसने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो समवेयर अराउंड 3 या 4 सेक्शन आए होंगे और इसने आराम से सेट कर दिया है तुम्हारे लिए। सो क्या डिफरेंस हो सकता है? Okay, class, just give me a second. Okay, class, last 5 minutes. Tell me, is it beneficial to work with K-fold or normal चलाएं ज़्यादा better है? टाइम कंज्यूमिंग होगा बट आई होप तुम सबने ट्यूशंस पढ़ी है ना? Yes, ma'am. तो तुम्हारे वहां पर अगर 50 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट किसी कोचिंग सेंटर में है तो वो तो मॉर्निंग टू इवनिंग बैचेस चलाते हैं। वो बैचेस क्यों चलाते हैं? एक ही बारी बुलाएं, सेम अमाउंट ऑफ मनी वो हर किसी से लेते हैं, एक ही बारी में बुलाएं, सारे टीचर्स भी फ्री हो जाएंगे। बैचेस में क्यों बनाना है? कम हो और सब पर फोकस हो, सबके डाउट क्लियर हो जाए। तो उससे उससे फायदा क्या होगा? सेशन में रिजल्ट अच्छा आएगा। ज़्यादा होगा, उनके रिजल्ट coaching अच्छा को आएगा। रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा आने का पैरामीटर क्या है? मार्क्स। दैट मीन्स परसेंटेज विल बी बेटर। इसका मतलब सिस्टम विल बी हाईली एक्यूरेट। गेटिंग माय Yes. पॉइंट?
अब अगर मैं बैचेस में भेजती जाऊंगी तो मेरी ट्रेनिंग भी आसान होगी उसके लिए कि पहली बार में मेरे को 20 को प्रोसेस करना है, फिर मेरे को नेक्स्ट 20 को प्रोसेस, वो एक टाइम पर जब वो 200 को प्रोसेस कर रहा है तो उसके लिए पूरा डेटा सेट है 200, बट जब वो बैचेस में प्रोसेस कर रहा है तो इट इज टेकिंग ओनली 20। सो 20 पर इक्वलेंटली टाइम निकालने का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे भी पैरामीटर्स होंगे जो मोर और लेस सेम होंगे तो उसके लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 2 क्रॉस 2 इज 4, लेकिन अगर मैं वही बोलती हूँ 248 इंटू 316 इज इक्वल टू वॉट, सो नाउ द प्रोसेसिंग इज मोर। लेकिन वहीं अगर 3 क्रॉस 3 आ जाता है तो वो आसानी से निकाल लेगा। सो यहाँ पर भी वही चीज होगी। सो वर्किंग इन बैचेस इज कंपैरेटिवली इजी बिकॉज चांसेस ऑफ मिसक्लासिफिकेशन विल बी रिमूव्ड। क्योंकि अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी तो या तो ओवर फिटिंग कर देगा या अंडर फिटिंग कर देगा, और हमें बेस्ट फिट चाहिए। सो दैट्स द ओनली रीजन वी एट टाइम्स टेंड टू यूज के फोल्ड, जो कि बहुत कम कंपैरेटिवली। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि वी हैव सर्टेन अदर मॉड्यूल्स और सर्टेन अदर एल्गोरिथम्स दैट आर इनकॉर्पोरेटेड, जैसे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम अगर हम इसमें कहीं पे यूज कर सकते हैं, एसजीडी जिसे हम कहते हैं, तो हमारी कंप्यूटेशनल कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सो द ओनली पैरामीटर इट इज कि वेरी एप्लीकेटिव मैनर, मतलब जहां मुझे एप्लीकेशन स्पेसिफिक है वहां हम इसे यूटिलाइज करने के बारे में सोच सकते हैं। क्लियर हुआ क्लास? बट दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज की डेट में कोई भी अपने मॉडल को सीधा मार्केट में नहीं डिप्लॉय करता, पहले वो बनाता है, फिर वो कुछ लोगों के साथ शेयर करता है कि चेक कर लो सही है या गलत है, कितना बेनिफिट कर रहा है, फिर वो मार्केट में भेजता है। आई होप तुम भी यही काम करते हो। अगर तुमने अपने घर में सबसे पहले चाय बनानी सीखी होगी या चाय के अलावा कुछ भी नया बनाना, कोई भी नया रेसिपी ट्राई किया होगा, तो तुम सबको इकट्ठा पहले नहीं बांट देते, अच्छा चलो सब खाएंगे, अच्छा बना है, तो तुम पहले थोड़ा सा खुद टेस्ट करते हो या नहीं करते हो? यस या मैम। अपने अपनी मॉम को या अपने सिस्टर को या किसी एक पहले किसी एक को जरूर खिला के देखते हो कि एटलीस्ट टेस्ट करके बता दो कुछ कम ज्यादा या ठीक बना या नहीं बना। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज वैलिडेशन। एंड आफ्टर दैट टेस्टिंग कब होती है? जब तुम सबको खिला देते हो, तब वो जब बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा बना है, देन इट इज योर एक्यूरेसी, देन द एक्यूरेसी इज बीइंग मेट, क्योंकि तुम्हें भी ये लग रहा था कि अच्छा बना है, उन्हें भी लगा अच्छा बना है। दिस इज व्हाट वी से ट्रेन, वैलिडेशन, टेस्टिंग। क्लियर हुआ क्लास? फाइन यस मैम। Yes, फाइन। ma'am. सो क्लास मैं इसके आगे एक चीज और बतानी है जो कि प्रैक्टिकल में नहीं बताना है, बट ये कल की क्लास के लिए आई वांट यू पीपल टू काइंडली रोट डाउन दी accuracies for all the 5 models. And I, before starting with random forest, I'll actually make you understand ये एक्यूरेसी कम क्यों आ रही है। ये तुम भी आइडेंटिफाई करके आना कि एक्यूरेसी कम क्यों आ रही है। जब मॉडल सारी चीजें ठीक से लर्न कर रहा है तो एक्यूरेसी कम आने का रीजन क्या हो सकता है? ठीक है, एग्जाम्पल या फिर हिंट दे रही हूँ। माई डेटा इज एक्चुअली वेयर इट। अगर तुम अपने डेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ ये फाइल शेयर कर रही हूँ, मैं डेटा सेट भी बेटा तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो फर्स्ट यू हैव टू लोड इट, ओके। और जो लोग अपने उसमें काम करेंगे, अपनी मशीन पे काम करेंगे, अपनी मशीन पे काम करने का मतलब होता है जो अपने सिस्टम पे जिन्होंने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है वो काम करेंगे, तो उनको अपने सिस्टम का पाथ देना पड़ेगा लोड करने के लिए फाइल। और जो लोग गूगल कोलैब पे काम करेंगे उन्हें हर बार ये लोड करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट सेंडिंग यू दिस फाइल एज वेल एज दी डेटा सेट। मैं भी गूगल क्लासरूम पे इसे अपलोड कर रही हूँ। लास्टली क्लास, माई डेटा सेट इज मोर spread out. I hope you people understand what we mean by spreading out. It is starting from, for some set of columns, it is starting from minus infinity to plus infinity, and that minus infinity for every column is different. So check it out कि क्या ये एक पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, एंड यूल गेट टू नो। ठीक है, सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई करके आना, नहीं होगा वो तो कल की क्लास में मैं बता दूंगी, ठीक है। इज इट ओके क्लास? आई नो सब बहुत टायर्ड हो। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. आई होप। लेकिन क्लियर हुआ है प्रैक्टिकल? बिकॉज इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल क्लास नहीं है। हाँ जी यस मैम। क्लास, जस्ट अंडरस्टैंड, वर्क लाइन टू लाइन। मैं क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली कोड नहीं दूंगी। आई विल सिंपली आस्क व्हाट एग्जैक्टली दिस लाइन इज डूइंग। नो मैटर, हो सकता है के फोल्ड वाली लाइन दे दूं और पूछ लूं यहाँ पे हो क्या रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट कर क्या रही है, ठीक है। So just read the code, understand the code, and after that you people can simply perform your exam. So today is 27th July. Okay, attendance. अच्छा आज तो हाँ बेटा, मैम कब है प्रैक्टिकल डेट? बेटा तुम्हारी 3rd को है।
Okay, ma'am. अच्छा क्लास, एक और बात है, 2nd of August को वी आर हैविंग आवर सेमिनार, मैंने बताया था ना, इट इज फ्रॉम 4 to 5 एंड इट इज फॉर एन आवर. आई पर्सनली वांट यू पीपल टू अटेंड इट, नॉट बिकॉज ऑफ कि मैं बोल रही हूँ, इट इज फ्रॉम वन ऑफ द एमिनेंट प्रोफेसर फ्रॉम IISc एंड यू शुड एक्चुअली लिसन टू हिम. थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, कुछ पूछना चाहोगे तो पूछ भी सकते हो. फाइन, अभी आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुम लोगों के पास पहुंच जाएगा. डोंट थिंक आउट कि अगले दिन हमारा डेटा साइंस का प्रैक्टिकल है. मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ, डेटा साइंस का प्रैक्टिकल पेपर नहीं है, वो असाइनमेंट है एंड इट इज वेरी इजी. इट विल बी वेरी इजी. इट इज नॉट लाइक कि हाँ बहुत मुश्किल आएगा. समझ रहे हो? मैम हाँ बेटा. टाइमिंग्स करेंगी बेटा 4 to 5 है इवनिंग में. इवनिंग में. ओके, तो मैम आप जैसे असाइनमेंट आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देते हो उसी तरीके से? अच्छा तू बेटा टेस्ट का पूछे वेबिनार? मेरे को लगा वेबिनार का. टेस्ट बेटा इन द मॉर्निंग, 3rd को इट विल बी इन द मॉर्निंग. 3rd को मॉर्निंग. हाँ, अगर तुमको लगता है कि नहीं थोड़ा टाइमिंग, अगर तुम्हें कोई क्लैश हो रहा है, नॉर्मली वी स्टार्ट बाय 10 और इट विल बी समवेयर अराउंड 12:30. गूगल फॉर्म आएगा तुम्हारे पास, बहुत आसान हो जाएगा, तुम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. बस सिर्फ इतना है, जो मोनिका मैम ने तुम्हें पढ़ाया और जो मैंने पढ़ाया, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ, मेरे वाले पेपर के लिए मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ के आना. I don't want you people to make me understand what is logistic regression, but I want you actually know what exactly the command is required for logistic regression. Getting my point? तो मुझे ये चीज पता होनी चाहिए. ये चीज तुम्हारे को, अगर तुम्हें प्रैक्टिकल लाइन ऑफ कोड नहीं समझ में आ रहा, मुझे थियरी से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज थियरी के जजमेंट अलग है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर होगा. ओके ओके. जूही, प्रेजेंट मैम. राक्षी, रिचा. रिचा इज देयर? ओके. मैम. रिचा तू बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती बेटा, बहुत क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम है कुछ? मैंने बहुत रेयरली सुना है. गायत्री, गायत्री इज नॉट देयर. निशा, प्रेजेंट मैम. शाखा इज देयर. मानसी, प्रेजेंट मैम. इक्षा, इक्षा आज भी नहीं है. ओके. श्रुति, प्रेजेंट मैम. नेहा रोज, प्रेजेंट मैम. कंचन, प्रेजेंट मैम. अर्पिता, प्रेजेंट मैम. देवांशी, प्रेजेंट मैम. अर्शिता, प्रेजेंट मैम. अदिति, अदिति इज नॉट देयर. शालिनी, प्रेजेंट मैम. देनिका, प्रेजेंट मैम. खुशी, खुशी इज नॉट देयर. निकिता, प्रेजेंट मैम. संपदा, सॉरी सिंपल. Simple present. ओके. जिज्ञासा, प्रेजेंट मैम. श्रेया, नंदिनी. प्रेजेंट मैम. ओके. श्रेया इज नॉट देयर ना. ओके. रिया, प्रेजेंट मैम. नियति, प्रेजेंट मैम. अक्षिता, सुरभि, वंदना, प्रेरणा, प्रेजेंट मैम. संपदा, प्रेजेंट मैम. कनिष्का, प्रेजेंट मैम. गौरी, Present, ma'am. ऋषिका, प्रेजेंट मैम. and Priyanshi. प्रेजेंट मैम. Okay, class, to help you out, I can do one thing. Can I share a sample paper related to my machine learning wala practical? Okay, I'll do Yes, this ma'am. thing. On Friday, I'll share with you all people. You know, you don't need to share it, I mean, send it back to me, so that एक idea लग जाएगा तुम लोगों को कि exactly क्या questions होंगे. ठीक है? I will not be sharing whole of the complete set. I'll be just sharing my machine learning practicals कि ताकि एक idea लग जाए कि किस sort of question आ सकते हैं. ठीक है? Yes. Okay, ma'am. Clear to everyone? This much help I can do. हाँ बेटा. Ma'am, in practical, we need to do that assignment only, no? Which you will share on spot. No, बेटा listen, Friday को जो मैं भेजूंगी that will be a kind of sample paper, okay? वो तुम्हें खुद को करना है, जरूरी